Today I am coming to you from what is known as India's winter wonderland, somewhere where snowfall would attract a lot of tourists. But you must be imagining what's in my background because there is no snow. And this is Gulmarg, one of the key attractions for tourists and foreigners during peak winter time, when it's covered with almost 8 feet of snow on the ground, and where skiers from across Europe and other places want to ski through the slopes of Afarvat peaks, which has received minimal snow, and the skiing on that slope is not possible. We also saw 3 editions of Khelo India's winter games taking place in Gulmarg, which was a massive success. But this year the target has been set in February, when the Khelo India games will begin. But the big question: will the western disturbances hit Jammu and Kashmir before Khelo India? Because this is where a lot of tourists come, and a lot of players from those who are basically linked with skiing, snowboarding and other winter activities. But you see scattered snow which has fallen several days back, and this background is not visible at all. This is though not for the first time that this snow has not fallen in the month of January or December, but the concerns are being raised by experts. Some are linking it with El Nino effect and saying that western disturbances are getting late, and others say that this is a cause of concern. This is beyond tourism. Why? Because snow deposits and it helps in generation of water. The beds of river Jhelum have also completely dried up. Power generation plants are running very low because there is no water available, and rainfall has been almost nil in December and January, not just in Kashmir but also in Ladakh. There have been few scattered snowfall that have taken place in Gulmarg, Ladakh and other parts of Kashmir Valley. But this is beyond this, because there are a lot of winter agriculture activities which take place. This will hit that also. Experts say that apart from tourism, this will create a crisis in terms of scarcity of water, because these water supplies will dry up if the snow does not fall on time. And during the peak Chulai Kalan, which is a 40-day long winter period in Kashmir, when the snow falls, it freezes because the temperature is freezing, and then it stays as snow deposits for several time, and that is where the snow is required. What happens now, one can't say, but weather department, the IMD J&K, says that snowfall is expected. There is a little western disturbances which might hit the higher reaches of Kashmir, like these mountains that you see over there. These are Afarvat mountain peaks which are covered with a little snow. This is not enough snow for skiing to take place or winter activities to take place. The tourism sector, those associated with this sector, say that they have seen these days before, but there is loss in the business in terms of cancellations, because a lot of tourists want to see snow. Even if you talk about Sonmarg, Pahalgam, no snow almost, and nil snow happening, and you wouldn't see a lot of things like Zojila remaining open for so long, because it snows at least 7-8 feet there, and then it becomes difficult to commute. That is also open because there has been no snowfall, though the temperatures are hovering around -8 to 10 degrees in Gulmarg. But less snowfall means that a lot of impact on a lot of activities in Kashmir. One can just hope that in coming days there will be snowfall which will end this dry spell for almost 2 months, and one would also expect that the snow will create those avenues for those who are linked with tourism sector, so that they can attract more tourists to Kashmir. The government says that it is beyond snow, and there is destination like Gulmarg and other places where you can go beyond snowfall. But the reality also is that a lot of people come during the winter time. They plan their holidays for the winter activities and snowfall, so that they can see the mesmerizing time of winter in Kashmir. Tell us about the expectations that you had coming from Shillong and then wanting to see snow, but there's no snow on the ground. Okay, so I'm Crystal Saxena. I'm visiting here for the first time from Shillong, Meghalaya. So yeah, Kashmir was one of the bucket list I wanted to see. This is the first time I was supposed to see snow, and the first snow of my life that I wanted to see was Kashmir. So yeah, there were high expectations, but nature is nature, can't complain. So we're taking the best of whatever we are getting, trying to see as much as we can, no complaints, and definitely finding an excuse to come again for the snow. Yeah. So, how would you rate this destination in terms of the facilities that you have here, as compared to the rest of the destinations where you might have visited in the past, and the sort of beauty that it has? It might have left you a little disappointed in terms of snow, but how do you see the entire, landscape that is, in Kashmir? I would say around, if you talk about the rating, I would say around 7 on 10, maybe. Things can be definitely better looking at the kind of tourist footfall they have.
But beauty wise, I think this is one of the finest places in India to see. I mean, definitely. I've been to a lot of places, India and abroad. And yeah, things can get better. People are a bit bugging the localites in terms of the sellers and all. But the hospitality on the other side is good as well. So it's okay. It's a balance. बर्फ़ कुछ भी नहीं गिर रहा है बहुत टाइम से, हम भी बर्फ़ का ही वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बहुत टाइम से। और अभी दिखा रहा है टाइम आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो टूरिस्ट आने वाले थे, जिन्होंने पहले से बुकिंग करके रखी थी गुलमर्ग में, जो कि अभी पूरा कैंसिल हो रहा है, उन्होंने पूरा कैंसिलेशन कर दिया गुलमर्ग का अभी यहाँ बिकॉज ऑफ स्नो, क्योंकि स्नो है ही नहीं यहाँ पे। अभी जब स्नो गिरने वाला है आने वाले दिनों में, तो मैं टूरिस्ट से अपील कर रहा हूँ गुलमर्ग से फिर से आने लगे लोग। और अभी आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश कम हो रहा है। तो इंशाल्लाह बर्फ़ जैसे ही गिर जाएगा तो यहाँ पे टूरिस्ट फ्लो फिर से हो जाएगा सर। मुख्तार साहब, क्या वजह रही है कि इस बार इतना प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल रहा है? आपके ऑलमोस्ट अगर कहें तो नील ही के ही आसपास जो है 1.5 महीने ज़्यादा आप यहाँ पे ना बर्फ़ हुई है ना बारिश हुई है। जी देखो, ड्राई स्पेल एक एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल चल रहा है लास्ट 45 डेज से, और कोई मेजर स्पेल अभी तक नहीं हुआ है। और जुलाई क्लान का भी 26-27 दिन ऑलरेडी निकल चुका है। और फोरकास्ट जो कमिंग डेज़ का है उसमें भी वेदर जो है ड्राई रहेगा टिल 24 जनवरी। और उसके बाद जो है 25 से जो है मौसम जो है थोड़ा सा करवट लेगा, और हल्की बर्फ़बारी कुछ एक जगहों पे पहाड़ी इलाकों में होने के चांसेस हैं। लगभग 26, 27, 28 तक थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा है। और 29, 30, 31 के आसपास 29, 30 और 31 जनवरी के आसपास एक एक्टिव WD आने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से बारिशें बर्फ़बारी के इम्कानात हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उसके लिए अभी कुछ वक्त और हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे चीज़ें और क्लियर होंगी, लेकिन एज ऑफ नाउ टिल 24 जनवरी वेदर विल रिमेन ड्राई। अब क्या वजह रही है? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं एल नीनो इफेक्ट है, कुछ कहते हैं कि जो गर्म मौसम हो रहा है उसकी वजह से जो है ये बर्फ़बारी नहीं हो रही। देखो, ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे ड्राई स्पेल हुआ है। इससे पहले 2018 का जो दिसंबर जनवरी था वो ऑलमोस्ट ड्राई था, 2016 का दिसंबर, और इसी तरह 2015 का जो जनवरी था, 2014 का दिसंबर, 2007 का जनवरी, 2003 का जनवरी। तो ऐसे आपका हर 4-5 साल के बीच में एक ऐसा विंटर आ जाता है जिसमें आपका एक प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल जो है देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो है डिफरेंट रिसर्च पेपर्स या एक्सपर्ट्स ने जो कोट किया है, और इंडिकेशंस भी हैं ऐसे ही कि एल नीनो जो है आपका परसिस्ट कर रहा है सिंस नवंबर, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो कहा जा रहा है लास्ट 50 ईयर्स के अंदर। और 3-4 इससे पहले भी स्ट्रॉन्ग एल नीनो बने हैं, खासकर पैसिफिक ओशन के ऊपर, और इस साल का भी जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो है। तो ये एक चीज़ है जिसमें आपका डेफिसिट प्रेसिपिटेशन जो है यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपका एल नीनो की वजह से ही ड्राई स्पेल रहा है, 1-to-1 रिलेशनशिप ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा गया है जब भी आपका एल नीनो स्ट्रॉन्ग बनता है तब यहाँ पे ड्राई स्पेल देखने को मिला है। और उसके बाद जो दूसरा जो रिसर्च का ये है कि इसमें जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का जो ऑसिलेशंस हैं वो अगर पॉजिटिव ऑसिलेशंस में अगर रहता है तो उसमें आपका एक वेट स्पेल खासकर विंटर के अंदर देखने को मिलता है यहाँ जम्मू कश्मीर एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ इंडिया में। और जब नेगेटिव ऑसिलेशंस में जब ये रहता है तब यहाँ पे डेफिसिट प्रेसिपिटेशन जो है देखा गया है। तो ओवरऑल जो है डिफरेंट थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वेट स्पेल ये ड्राई स्पेल जो है कंटिन्यू चल रहा है, और आने वाले दिनों में भी फ़िलहाल 24 तक ड्राई रहने के इम्कान हैं। मुख्तार साहब, हमें ये भी बताइए कि इस ड्राई स्पेल से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हों या हमारे वाटर रिसोर्सेज हों, हाइड्रो पावर की जो कैपेसिटी है वो भी उससे रिड्यूस हो सकती है। जी देखो, इसके एक तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं और दूसरा है इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स। जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं इसमें देखो ओवर द ईयर्स हमारे ग्लेशियर्स जो है श्रिंक हो रहे हैं, और ऐसे में आपका बर्फ़बारी ना होना वो भी एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, और उसके साथ साथ आपका जैसे रेट ऑफ श्रिंकेज जो है वो और रैपिड हो सकता है, क्योंकि दर्जा हरारत भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा गया है। जो दिन का जो डे टेम्परेचर्स हैं वो नॉर्मल से लगभग 7-8 डिग्री। तो ऐसे में आपका और स्ट्रेस हो सकता है खासकर ग्लेशियर्स के जो रिसोर्सेज हैं। और उसके बाद जो आपका जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसको भी इम्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो नदी नाले हैं उनमें पानी बहुत ही ज़्यादा कम है। और ऐसे में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इवन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें भी आपका इम्पैक्ट हो सकता है कमिंग डेज़ में, अगर सूरत हाल ऐसा ही रहा तो। और उसके साथ साथ जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स हैं आपके एग्रीकल्चर के, जिसमें अर्ली फ्लोरिंग के चांसेस हैं, बहुत सारे जो टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप्स हैं, और कुछ एक क्रॉप्स में तो ऑलरेडी ब्लूजम आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ जो आपका वीट, मस्टर्ड वगैरह अभी ऑलरेडी फील्ड्स में खासकर
जो जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं या यहाँ वैली में कुछ एक जगहों पे सरसों उगाया जाता है, तो इनका जो है हाई टेम्परेचर्स के कारण फोर्स्ड मैच्योरिटी होता है, जिसके कारण आपका प्रॉपर ग्रेन फिलिंग वगैरह नहीं होगा, जो अल्टीमेटली आपका क्वालिटी और जो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन है, उसको इम्पेक्ट कर सकता है। उसके साथ साथ आपका इरिगेशन पर्पज़ के लिए कुछ एक क्रॉप्स के लिए मतलब दिक्कत हो सकती है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक पैडी, मतलब अगर सूरत हाल ऐसा रहा, ड्राई स्पेल एक्सटेंडेड रहा, तो पैडी उगाने पे ना उगाने पे मजबूर हो जाए हम लोग, हमें अल्टरनेट क्रॉप्स का भी सोचना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट फायर्स ऑलरेडी चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से, तो ये चीज़ें जो है और ज़्यादा फैल सकती हैं। तो ओवरऑल जो है लाइफ लाइन है स्नोफॉल यहाँ के लिए, नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर, बाकी जो आपके जो एडजॉइनिंग हिमालयन स्टेट्स हैं, खासकर ये उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश है, तो इन जगहों पे भी इनका असर जो है देखने को मिलता है।